फ्री हो गया और वो पंचर भी हो गया और उसका जो रिम था वो भी टूट गया, इतनी जोर से हिट हुआ उसको. आई वाज लाइक सुभान अल्लाह क़दर अल्लाह मा शाअ फ़अल, ये क्या हो गया. एंड आई वाज देयर, आई वाज कूल एंड काम, आई नेवर नीडेड हेल्प उस टाइम पे. लेकिन एक शख्स आया मेरे पास, बड़ी उम्र के थे वो, उन्होंने गाड़ी पार की. डेफिनेटली वो फ्री तो नहीं होंगे उस टाइम, रात को लेट घर जा रहे होंगे. गाड़ी पार करके मेरे पास आ गए. वल्लाहिल अज़ीम वो मेरे साथ खड़े रहे जब तक मेरी गाड़ी घर नहीं गई. मेरी हेल्प की, कॉज करवाने के लिए, रिकवरी व्हीकल बुलाने के लिए, मुझे तसल्लियाँ दी, मेरी वो बैकबोन और सपोर्ट बन के रहे. हालांकि आई टू बी ऑनेस्ट मैं अकेला भी ठीक था, लेकिन उनकी प्रेजेंस ने मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट किया, बहुत ज़्यादा कंफर्ट किया कि आई हैव अ कंपनी टू टॉक टू, आई हैव समवन विद मी राइट नाउ. मैं अकेला नहीं हूँ. मुश्किल हालात में ना इंसान अकेला खड़ा होना है तो बड़ा अजीब सा फील करता है, बेबस फील करता है. कोई साथ आके सिर्फ खड़ा भी हो जाए ना, वल्लाही ही फील स्ट्रेंथ. एक और एक पे 11 हो जाते हैं. कोई तो है मेरे साथ इस टाइम. और सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि उसको बुलवा के, उसको गाइड किया, मेरी गाड़ी में बैठ के रिकवरी व्हीकल पे गाड़ी चढ़वाई. ये कहा कि तुम नहीं करो, मैं करूँगा ये, और चढ़वा के घर पहुँचाया. और फिर यहाँ तक इंसान बस ठीक है मदद कर दी, अब छोड़ दे. अगले दिन मैकेनिक को कॉल किया, अपने मैकेनिक को, कि तुमने ख्याल रखना है और तुमने क्या क्या काम करना है, तुमने कौन सी चीज़ लेनी है, और उसे बार्गेन भी खुद किया. और मुझे कहा तुमने किसी के पास नहीं जाना सिवाय इस मैकेनिक के पास जाना है, और सारा काम करवाया. एंड आई नेवर न्यू दिस पर्सन एनी. और मुझे उनके जेस्चर से और उनके जो डिमीनर था पता चल रहा था कि वो मुझे भी नहीं जानते. बहुत से लोग ना आपके साथ एहसान करते हैं बिकॉज दे नो यू, यू हैव बेनिफिटेड देम, या उन्होंने आपके लेक्चर सुनते हैं. ही नेवर न्यू मी, ये आपको बता सकता हूँ. अगले दिन मैकेनिक को कॉल की, उसके पास ले गए, उसे बार्गेन किया, मुझे सारा गाइड किया. हर एक घंटे बाद, हाँ काम कितना हो गया, अच्छा ये चीज़ नहीं लेनी, वो लेनी है. जब तक ये सारा काम नहीं हो गया तब तक वो हेल्प करते रहे. एंड ही वाज ऑन कॉल विद मी. आई वाज लाइक सुभान अल्लाह, कितना नेक अल्लाह का ये बंदा है. मुझे उस दिन ना सही वली की डेफिनेशन पता चली कि अल्लाह के औलिया कौन होते हैं. वो बेशक उनको हदीस याद नहीं थी, उनको कुरान हिफ्स नहीं था, उनको बहुत ज़्यादा वो शायद तहज्जुद ना पढ़ते हों, लेकिन ही वॉज द मोस्ट बेनिफिशियल टू पीपल. और ये होते हैं अल्लाह के औलिया. अल्लाह के मैंने क्या फरमाया, इट इज़ मोर बिलवड टू मी टू वॉक विद अ मुस्लिम फॉर हिज हेल्प than sitting in i'tikaf in my masjid, Masjid Nabawi, for 1 whole month. Just imagine अल्लाह के नबी का i'tikaf कैसा होगा, उनका कुरान कैसा होगा, मस्जिद नबवी कैसी है, और वहाँ में एक नमाज पढ़ने का कितना अजर है. अल्लाह के ये फरमा रहे हैं. हमारी प्रायोरिटीज़ किधर है, हमारे सब किधर है. यस, कुछ चीज़ों पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, नमाज पे नहीं करना, फ़र्ज़ नमाज को नहीं छोड़ सकते, शिर्क किसी हालत पे नहीं करना, चाहे माँ बाप भी कहें. लेकिन आप फ्री हो तो मदद कर दो ना किसी की. यार पैसे कमाने पीछे लगे हुए हो, अल्लाह आपकी मदद करेगा. आप अपने खाना खाना जा रहे हो, आप उसकी मदद कर दो. कुछ देर लेट हो गए तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ. सो बी फ्रॉम दोज पीपल हु आर द मोस्ट बेनिफिशियल टू पीपल. और फिर फरमाया whoever swallows his anger then Allah subhanahu wa ta'ala will conceal his faults. जिसने गुस्से को पी गया, काबू कर लिया, अल्लाह ताला उसके ऐबों को छुपा देगा, ना दुनिया के सामने जाहिर करेगा, ना क़यामत के दिन आदम से लेकर आखिरी इंसान तक उनके सामने जाहिर करेगा. बिल्कुल पाक और साफ हो चला जाएगा. और फिर फरमाया कि whoever walks, again भाई की मदद, whoever walks with his brother regarding a need until he secures it for him, then Allah subhanahu wa ta'ala will make his footings firm across the bridge on the day of judgment when the footings will be shaken. अल्लाहु अकबर. कि जो अपने भाई की मदद करेगा, कहाँ तक इस हदीस में क्या आता है नेक्स्ट स्टेप में, कि जब तक वो उसका काम करवा नहीं लेता, जब तक वो उसका काम सिक्योर नहीं कर लेता, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन पुल सरात के ऊपर से जब लोगों के कदम फिसल रहे होंगे, इसके कदमों को जमात देकर और खड़ा कर देगा. अल्लाहु अकबर. एक और हदीस में आता है, यू नो, मूविंग ऑन, जस्ट राइट देम डाउन इंशाअल्लाह. आई विल क्विकली try to cover them all इंशाअल्लाह ताला. ठीक है, बेहतरीन अमाल. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि which deed is the dearest to Allah subhanahu wa ta'ala. He replied to perform daily compulsory prayers at their fixed timings, यानी अव्वल वक्त में नमाज को अदा करना. और फिर पूछा गया फिर उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ क्या है, फिर फरमाया be good and dutiful to your parents.
کیونکہ ٹائم کم ہے, میں ابھی آپ کو انشاءاللہ I'll not go into depths and details, میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا چلا جاتا ہوں, ٹھیک ہے. ایک اور چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین, پوچھا نہیں کیا کہ آپ نے خود بتایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ سب سے بہترین فاسٹنگ کون سی ہے؟ فرمایا داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنا, اور داؤد علیہ السلام کی تہجد اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آدھی رات سوتے تھے, پھر اٹھ کے تہجد پڑھتے اور پھر سو جاتے until 1/6 of the night, وہ اس میں سوتے اور پھر اٹھ جاتے ہیں. اور فاسٹنگ he used to fast every other day, یعنی every alternate day. منڈے کو روزہ ہے تو پھر ٹیوزڈے کو چھوڑ کے وینسڈے کو روزہ رکھا, پھر تھرسڈے کو چھوڑ کے فرائیڈے کو روزہ رکھا. اس طرح ہر آلٹرنیٹ ڈے کو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. لیکن جو آلٹرنیٹ ڈے پہ نہیں کر رہا اس کو نہیں چاہیے کہ وہ فرائیڈے کو اکیلا روزہ رکھے یا کسی ایک دن خالص کے روزے کے لیے, ٹھیک ہے, تو وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک اور بہتر اعمال. معاذ بن جبل فرماتے ہیں, صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ میں نے اللہ کے سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ among which deeds are the most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala, کون سے اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ that you die with your tongue is moist in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, کہ تم اس حالت میں مرو, تم اس حالت میں اس دنیا سے جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہو. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ the most beloved words to Allah subhanahu wa ta'ala is the one who is prostrating, یعنی سجدے کی حالت میں کوئی انسان کہے یا رب اللہم اغفر لی, اللہم, یا پھر یہ کہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما فاغفر لی فلا یغفر الذنوب الا انت, یا پھر کہے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی ولا یغفر الذنوب الا انت, ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت, کہ اللہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے, تو مجھے معاف کر دے, بے شک تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. یہ سیر عالم النبلہ کی حدیث ہے علی بن ابی طالب کی طرف سے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم کثرت سے اپنے پہ ظلم کا احساس کریں, اللہ سے معافی مانگیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابو ذر الغفاری سے ملے اور کہا کہ ابو ذر, کیا تمہیں 2 کوالٹیز کے بارے میں نہ بتاؤں میں کہ جو بہت ایزی ہیں ان پہ عمل کرنا, یعنی they're easy on your back and they're heavier on the scale of good deeds than others. تمہارے لیے کرنا آسان ہے لیکن پلڑے میں ترازو میں بہت بھاری ہیں. ابو ذر نے فرمایا کہ آف کورس او میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا کہ you must have good character and observe long period of silence, اچھا اخلاق اور لمبی خاموشی. اور پھر کہا والذی نفسی بیدہ, واللہ اس ذات کے ہاتھ جس میں میری جان ہے, no one can behave with deeds more beloved to Allah than these 2. سبحان اللہ.